Evening, everyone. First of all, I would like to welcome our chairman, CA Ankur Kumar Gupta ji from Jaipur, a very dynamic and happening personality who is always there to help us at any matter rather. इनका बहुत अच्छा एक विजन है, मिशन है, जो हम लोग वेबिनार्स के थ्रू देख रहे हैं, कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे मेंबर्स तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं। मेरी एक इनिशियल स्टार्टिंग में ये कंप्लेंट थी कि जो छोटे शहर हैं, जो छोटी जगह हैं, हम लोग वहां पे शायद फिजिकल सेमिनार करके नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये इन्होंने इनिशिएटिव हमारे चेयरमैन साहब ने लिया कि हम लोग वेबिनार के थ्रू उन छोटी जगहों पर भी पहुंच सकते हैं, अच्छे स्पीकर्स को वहां तक ले जा सकते हैं, जिससे कि हमारे जो मेंबर्स ऐसी जगहों पर हैं जो फिजिकल सेमिनार नहीं अटेंड कर सकते, वहां तक पहुंच पाए। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं सबसे पहले अंकुर कुमार गुप्ता जी को। नेक्स्ट मैं वेलकम करना चाहता हूं हमारे सेक्रेटरी जयंत कुमार तिवारी जी को। अगेन, जो हमेशा स्माइलिंग एवर मोटिवेटिंग पर्सनालिटी, जिनके पास हमेशा बहुत हंसी खुशी, आपको कोई टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप जयंत भाई से बात करिए, आप अपनी टेंशन भूल जाते हैं हमेशा। तो ही इज वेरी मोटिवेटिंग। वी वेलकम यू सर। नेक्स्ट पार्ट, हमारी एआई कमिटी सीआईआरसी की बहुत होनहार टीम मेंबर मेघा दानिका जी को मैं वेलकम करता हूं, जो खुद भी एक बहुत अच्छी एआई की स्पीकर है, जिनके बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत तारीफें सुनी है, और मुझे ऐसा लगता है आज पहली बार मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। वी वेलकम यू मैम। आज का इस सिनारियो में अगर हम लोग देखें तो एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। हम अपने ऑफिसेज को भी अगर बात करते हैं, आज अगर हम ऑफिसेज में एआई का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे मैंने भी अपने ऑफिस में कुछ एआई का इस्तेमाल करने के बाद चीजें चेंज करी, चीजें बहुत इजी और बहुत अच्छी हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई में नई चीजों को सीखना, अपडेट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं मेघा मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम, बहुत सारे मेंबर्स हो सकता है एआई का ऑलरेडी कोर्स कर चुके हों, तो बेसिक्स हो सकता है उनको आता हो। तो क्या एडवांसमेंट्स हैं, क्या रीसेंट चेंजेस हैं, क्या चीज वो और हैंड्स ऑन कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल चीजें हैं जो वो देख सकते हैं, जो कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा इस पे आप फोकस करेंगे, एनलाइटन करेंगे, तो हम लोगों को सेशन में बहुत मजा आएगा और हम लोग इंटरेस्टिंगली सेशन को पूरा अटेंड कर पाएंगे। तो प्लीज इस पे जरूर फोकस करिएगा मैम। तो सबसे पहले मैं एक बार अंकुर कुमार गुप्ता जी को हैंड ओवर करना चाहता हूं उनके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, उनके वेलकम एड्रेस के लिए। अंकुर कुमार गुप्ता थैंक यू अंकुर गोयल जी। मेरे को कलीग रीजनल काउंसिल मेंबर एआई कमेटी के चेयरमैन भी हैं, जिनका विजन था कि एआई पे बहुत अच्छा काम किया जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं एज ए सीआईआरसी लेवल पे भी। ये आज पहला सेशन है हमारा। हम एक सीरीज चलाना चाह रहे हैं। हमारा एक विजन है कि हम हर मंथ, एवरी मंथ हम 2 सेशन एआई के ऊपर रखें, जिसे मेंबर तक रेगुलर अपडेट होते रहें कि रेगुलर क्या चेंजेस आ रहे हैं, और क्या एआई किस लेवल पे जा रही है, और क्या अपडेट रेगुलर आ रहे हैं, नए नए एप्लीकेशन आ रही है, नई नई सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें रेगुलर हम पहले सुनते थे जब एआई आई थी, चैट जीपीटी। उसके बाद में पता नहीं बहुत सारे एआई एजेंट आ गया, एआई टेक्नोलॉजी में इतने टूल्स आ गए जिनका हमको नाम भी नहीं पता अभी। बहुत सारी चीज किस पर्टिकुलर किस काम के लिए कौन सा टूल यूज करना है, तो वो चीजें। और फिर कस्टमाइज एआई भी आ गई अब। आप देखोगे कि लोग अपनी अपनी खुद की एआई बनाने लग गए। सीए चैट जीपीटी हो गई, जैसे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जीपीटी आ गई। सबने अपनी अपनी चैट जीपीटी भी बना ली है। तो वो कैसे बनाई जाती है, कैसे डेवलप किया जाता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, हमारे डेली रूटीन में हम हमारे प्रोफेशन में क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको बेटर निकाल सकते हैं हमारे प्रोफेशन में एआई यूज करते हुए। और वेबिनार करने का फायदा यही है, जहाँ ब्रांचेस नहीं है वहाँ हम मौका मिले मेंबर्स को, स्टूडेंट को, कि वो हमारे से कनेक्ट हो पाए। जहाँ मेंबर है वहाँ तो ब्रांचेज है, वहाँ तो मेंबर अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं, ब्रांचेज में प्रोग्राम हो जाते हैं। जैसे अंकुर जी ने बताया, कोर्स हो चुके हैं बहुत जगह। तो लगभग लगभग 400 के आसपास कोर्स हो चुके हैं ऑल इंडिया लेवल पे। तो 400 कोर्स होना अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है एक साल के अंदर। लास्ट ईयर ये कमेटी बनी थी, तो एक साल में इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो और अभी लेवल 2 भी कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है पुणे में, जो हुआ है। एक जयपुर में भी हमारे कॉन्फ्रेंस हो रही है 22 और 23 अगस्त को, एआई समिट बोल के। पूरे रीजन में एक ही समिट होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छी लेवल पे करने की, और आप सब लोगों से ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करूंगा जो मेंबर सुन रहे हैं, और अच्छा टाइम निकालें उसमें। और बाकी मेंबर्स तक
हमारी रेगुलर अपडेट जाती रहे। न्यूज़लेटर के माध्यम से हम न्यूज़लेटर रेगुलर पब्लिश कर रहे हैं। 12 तारीख को हमारा संवाद से समाधान, एक हमने स्कीम चला रखी है। एवरी मंथ हम मिड ऑफ द मंथ हम क्या करते हैं, मेंबर्स की जो प्रॉब्लम है उनको सुनते हैं। मेंबर हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो गई, एसएसपी से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, कुछ भी आपको नया कोर्स समझ कुछ जैसे यही एक एआई वाली चीज भी हमारे वहीं से आई थी कि हम एआई पे हम सेमिनार करें। तो इसी को हमने नई थीम में रख के एक सीरीज के रूप में चालू किया है। तो कोशिश हम ये है कि मेंबर्स की जो क्यूरीज है, जो सजेशन है, उनको कोशिश करते हैं सोल्व करने की, उनको इनकॉर्पोरेट करने की हमारे प्रोग्राम के रूप में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। हमारे बीच में हमारी मेगा मैम हैं जो अच्छा इस पे काम कर रही है, एआई पे फैकल्टी भी है। तो मैं हैंड ओवर करूंगा। थैंक यू अंकुर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैम को धन्यवाद कि आपने हमको टाइम दिया। और कल भी हमारा एक रेगुलर सेशन रहेगा, प्रिया मैम है हमारे यहाँ जयपुर से ही, वो कल का सेशन रहेंगे लेंगे रेगुलर में। 2 दिन की एआई जो भी हम सेमिनार करेंगे वो 2 दिन की होगी। एक दिन फर्स्ट डे और सेकंड डे, कंटिन्यू 2 दिन एआई के ऊपर हम बात करेंगे। तो मंथ पे एक दिन या फर्स्ट वीक ऑफ मंथ कोशिश करेंगे हर एवरी मंथ में हम ये सीरीज चला रखें और मेंबर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू अंकुर जी। Thank you, sir. Thank you so much for the words of wisdom. And now I would like to request Jayan Bhai, our secretary, to give his opening remarks. Jayan Bhai. Thank you so much, Ankur Goyal ji, for inviting me in the today's session. I am very much thankful to our dynamic chairman, Ankur Kumar Gupta ji, whose vision is to reach each and every part of the corner of the CIRC. One who does not have a good faculties and infrastructure, and due to lack of these things, they are unable to hear and get the knowledge updated. So once again, thank you very much to the team that you are organizing such an event. And I always used to say that the survival of the fittest doesn't mean that how you are tall and how you are strong. It means that how you are adaptable to the surrounding. So AI is one of the most important thing through which one should must be go through it. Without going through it, we are extinct from it. So one should must come into the AI, must have the knowledge of AI, how to write a prompt. I am very much confident that today's speaker, CA Dhanuka ma'am, Megha Dhanuka ma'am, who is from Jaipur, and as described by our chairman, he is a very dynamic speaker also. So I'm very much confident that his words of wisdom, knowledge, and the experiences that he shares to our member is very much useful. And once again, I welcome all the audience who are joining from the different parts of the CIRC. Thank you very much for the giving us opportunity to deliver my words of wisdom. Thank you very much, Ankurji. Over to Ankurji. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Now, without wasting even a single minute, I would request Megha ma'am to please take over the session. Ma'am, the ball is in your court, ma'am. Hello everyone. Thank you Ankur sir. Thank you Ankur Kumar Gupta ji, Ankur Kumar Goyal ji, because I have to mention your both names. Ankur square se kaam nahi chalega, I know. For your vision for the AI. Actually, the AI committee at the CCM level and the HO at whole is working good on this AI. But when we talk about the region, when we talk about the CIRC के हर एक ब्रांच में अभी तक इस लेवल पे वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है. So yes, we are here. Actually, the chartered accountant profession is undergoing a digital transformation, and artificial intelligence is at the forefront of it. Artificial intelligence is poised to revolutionize how chartered accountants perform their duties and how they streamline their routine tasks from basic verges to unlocking new avenues of financial insight and client services. So yes, friends, I am Megha Dhanuka and I'm your fintech girl. So no worries. Today's is a mutual chat because I can see your all chat. So friends, first I want to know how many of you are doing hands-on training with me. So please type hi or any indication so that we can process as well. Otherwise, we can show you the examples only. Okay, yes, we are getting responses. Sumit ji, C. Rahul Gupta ji. Okay, meanwhile, I'm sharing my screens to start.
Is my screen visible? Yes, yes, perfectly visible. Okay, okay. So to start with, I want to know what is GPT for you all. Friends, we all know GPT is a generative pre-trained transformers and we are using it day by day. बट जब भी कोई वैल्यू का नाम आता है अपन चैट जीपीटी, क्लॉड एआई, जेमिनी एआई इनका ही यूज कर रहे हैं. बट क्या हमारे सीए प्रोफेशन में इनको हम बेटरमेंट से यूज कर सकते हैं? यस. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट वी विल स्टार्ट. So today's topic is how can we customize GPT? So friends, yes, we can customize our GPT. As you all aware that we are using, as you all are aware that we are using CAGPT. So what is CAGPT for you all? CAGPT is also a customized GPT, friends. So how can we create this custom GPT at our chat GPT forum? So first we have to log in our chat GPT. So let me share this. This is my chat GPT and I've already logged in. So for customized GPT, friends, you have to be logged in with your paid version only. It's applicable only for the paid version, not available for the free version. So for customized GPT, first you have to log in your paid version. Okay. Second, verify the subscription level. As I just told that you have to ensure that subscription allows you a GPT builder. It is available only for the Pro and Plus users. Then locate GPT section and then you can access your GPTs. So here, we have the GPT option with us. Click on this. After clicking, you can see all the customized GPTs. There are so many options. You can write any of the option and use these GPTs for your purpose. For example, I have created one GPT that is CA All Certificate Assistant. See, if you have created any kind of GPT, it shows your name by Megha Dhamka. So click on the same. Actually, I have lots of tabs currently. And click on Start Chat. I'm showing this example how custom GPT works. See, it's a custom GPT for preparing any kind of certificates like generate an investment certificate, any net worth certificate. You can draft any kind of board resolution as well and any kind of stock certificate. So for example, we can start with investment certificate. Friends, if you notice, there was a line searching in my knowledge. Wherever GPT shows searching in my knowledge, it means it is searching in the knowledge base. And where it comes searching in the web, so it is not covered under the knowledge base. It is not covered under the ambit of the knowledge base, and it is searching in the various websites available on the search engines. So here it is asking from us, please provide the following details to generate the investment certificate. Client name, address of the client, amount invested, nature of investment, date of investment, purpose, name of the chartered accountancy firm. But yes, I know you all have fear that we don't want to share our client details and our own details as well. I know the privacy concern. No issues. We can write here, please. Friends, always be humble with these GPTs because for everyone, it is an artificial intelligence, AI. But for us, for the chartered accountant, it's IA, intelligent article. So always write please so that it will give you the humble answers. Okay. So please share
me the draft Okay, friends, as you can see, it is showing that here is a professional draft format of an investment certificate in line with the ICI guidance note. Yes, I trained this GPT to give the answer as per the guidance note issued by institute only. So, to the board of directors, because now, as per the current circumstances, we have to mention to whom it will be utilized. Now, to whomsoever it may concern it, we can't use that because earlier it was misutilized by the owner of the certificate. So, the certificate of investment, the complete details are here. If you want this in the Word format, we can use a word. We can ask for the Word format as well from this GPT. So yes, it is the complete format. So friends, how I made this GPT? This is the point. Yes, I know. So click on the GPTs again. And see, there are two options. First is my GPTs. So here are some GPTs, the list of my GPTs. Friends, as you can see, this CA All Certificate Assistant is for everyone. I know some GPTs should be private, like project build. I made some GPTs like QR code generator, audit document assistant, and project report builder. It's for my own purpose and for my office purpose only. I don't want to publicize them all, but I have only one GPT which publicize with everyone. It is available to you all. You can search it on the GPT options as well. So for new creation, you have to click on create a GPT. Okay. Here, there are two options, create and configure. Okay. So in configure, you have to give the name. If you want to create a new GPT, you have to give his a name like कोई बच्चा अगर घर में आता है हम भी तो उसको नाम देते ही है ना, वैसे हमें इसको नेम देना है. So for demo purpose, we can start with audit documentation. Description as per your choice and instruction. Actually, friends, these GPTs works on machine learning because when we start making us, when we start learning within us, या हम ये कह सकते हैं हम जब भी इनके साथ कॉन्वर्जेशन करते हैं वो कॉन्वर्जेशन बाय इंस्ट्रक्शन दे बिल्ड themselves, वो उसके अकॉर्डिंग ही बिल्ड होता चला जाता है. तो यहाँ पे आपको वो सारे इंस्ट्रक्शंस देने हैं जो आप इसके अंदर चाहते हैं. Like in audit documentation, we can give this instruction कि only जो भी हमने इसमें knowledge base upload करा है आप उसी के according ही answer करेंगे. Otherwise आप searching from web कभी भी option नहीं देंगे. Okay. Second, you can give the another option or instruction as कि जो भी आए सबसे पहले आप checklist दे. First you have to inquire what is the requirement of जो भी सर्च कर रहा है इसके जीपीटी के अंदर. जब भी आपको इसके अंदर जाना है, लाइक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ वाइड सब्जेक्ट. लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट इंडिपेंडेंस लेटर, ऑडिट इंडिपेंडेंस लेटर या ऑडिट अलॉटमेंट लेटर, आपका कंसेंट देना है, एनओसी देने हैं, वेरियस जो भी लेटर्स है आप कोई भी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं. वो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ देंगे. कन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट होगी, कन्वर्जेशन वो क्या बोलेगा. जैसे मेरे जीपीटी में अगर आपने देखा हो सीए ऑल सर्टिफिकेट असिस्टेंट, उसने 4 ऑप्शंस दे रखे थे. कौन सा सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट चाहिए या वैसे ही इस तरीके की जीपीटीज के अंदर यहाँ पे आप दे सकते हैं कि कन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट हो. Yes, hello, I'm able to generate audit documents. What is your requirement? We can start with this. Okay. Knowledge base. So this is the knowledge portal, friends. You can upload here numerous files. Any of the audit documentation, if you want to upload, you can upload it here.
कैपेबिलिटीज, यस, जैसा मैंने आपको मेंशन किया, इफ यू वांट टू सर्च ऑन वेब, अगर आप चाहते हो आपका जीपीटी वेब में सर्च करके बता दे, अगर उसके नॉलेज बेस में अवेलेबल नहीं है वो डेटा, तो वो वेब सर्च कर दे, अदरवाइज आप चाहें तो इसको अनटिक भी कर सकते हैं। कोड इंटरप्रेटर एंड डेटा एनालिसिस, यस, अगर आपको कोड जो भी हो रहा है वो आप समझ लीजिए, कई बार क्या होता है कि हम अपने पाइथन लैंग्वेज के अंदर अगर कोई भी कोडिंग यहाँ दें या कोई ऐसी फाइल यहाँ पे अपलोड कर दें जो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर है, तो आप यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं एंड इट विल रिस्पॉन्स यू। एक्शंस, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी क्रिएट एक्शन करके हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन स्कीम्स यहाँ पे दे सकते हैं। प्राइवेट पॉलिसी, इफ यू वांट टू क्रिएट एनी प्राइवेट पॉलिसी यू कैन क्रिएट। ओके, so this is all, and after clicking the create option it will be created. Then in create chatbot, this is the chatbot with the GPT only. जो भी ये जीपीटी अपन बना रहे हैं उससे किए गए जो भी चैट होंगे, जैसे आप उसको जो लर्निंग देंगे, जैसे मशीन लर्निंग मैंने मेंशन किया, वो यहाँ पे की जाती है इसकी। ओके, so this is all the complete custom GPT creation. Let me check any query till here. No. So to start with, क्या हम QR कोड जनरेट करना सीखें? Yes, we can create. Wait. So for demonstration, we have already learned and no for CA in practice, सबसे बड़ी चीज एक ही आती है, क्लाइंट टाइम पे पैसा नहीं देता। Yes and no, this is the problem. Secondly, अगर मैंने 50,000 का बिल बनाकर दे दिया प्लस जीएसटी, देन वो हो सकता है 45,000 का ही पेमेंट कर दे कि मैम नहीं नहीं अभी हमारे पास 45,000 आप रख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए मैम। तो हम इसके लिए एक ट्रिक भी है हमारे पास। हम क्या प्रॉम्प्ट दे सकते हैं? प्लीज generate a QR code for rupees 10,000 for UPI. Friends, whenever you want to create a QR code, you have to mention your UPI ID. For UPI ID 7737050206 @ this is my UPI ID. So here is your scan using PhonePe. If you would like to printable version branded logo, let me know. Generate image. It's analyzing. Yes, friends, it's downloaded. Let us check. Is it working or not? So it is on your screens, friends. Can you please check and message, is this working or not? Please respond in the chat box so that I can see your responses. Is it working? Yes, yes, Abhishek Sharma ji, yes, it is working. So earlier in my webinar, some person asked me that, मैम क्या ये इसका वैलिडिटी रहता है? इसका वैलिडिटी नहीं रहता, कितने टाइम तक इसका वैलिडिटी रहता है? यस फ्रेंड्स, ये कंप्लीटली वैलिड है फॉर, क्योंकि जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉप्स में क्या रहता है कि वो एक उनके पाइन लैब्स के डिवाइस के थ्रू या किसी भी डिवाइस के थ्रू उस कोड को जनरेट करता है, दैट्स व्हाई वो 10 मिनट्स तक ही वैलिड रहता है। बट यस फ्रेंड्स, ये क्यूआर कोड जब भी आप ओपन करेंगे इसी तरीके से आपको आंसर दिखाएगा अनटिल अनलेस यू चेंज योर यूपीआई आईडी। आपका यूपीआई आईडी जब तक सेम है वो सेम ही आंसर दिखाएगा। क्या हम और क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं? ट्राई करें। ओके,
we can generate our business card with it. Okay, so prompt क्या लिखे हम इसके लिए? My name is CA Megha Dhanuka. I am from Jaipur. Email ID is camegha.dhanuka@gmail.com. Mobile number is this. My LinkedIn ID is this. If you have your website, you can also mention it here. Can you create a QR code where anyone can directly save all my information as his mobile, like a contact card? I know there is a problem. जब भी हम किसी से मिलते हैं हमें नंबर डिक्टेट करना पड़ता है, अपनी ऑल डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है. सो फ्रेंड्स, इट इज सिंपल क्यूआर कोड एंड ये हैंडी भी है. आप अपने फोन में इसको सेव कर लीजिए. जब भी किसी से मिले तो सिंपली आपको क्यूआर कोड दिखाना है. आई नो आईफोन्स के अंदर तो उसको टच टू टच करने से ही आपकी कॉन्टैक्ट कार्ड शेयर हो जाता है. यस, बट दिस इज फॉर द एंड्रॉयड यूजर. और अगर आप आईफोन यूजर भी हैं और दूसरा अगर वन टू मैनी कोई और आ जाता है, जैसे लाइक आपके एंड्रॉयड यूजर आपके पास है, तो आप उनको ही शेयर कर सकते हैं. देखें ये वर्क करता है या नहीं. सो यस, कॉपी एंड आई एम पेस्टिंग इट हियर. Okay, file is ready to download. Yes, it's downloaded. So again, friends, I need your participation. Please check it is working or not. Yes, yes. Okay. So it's a simple QR code and you can download it as a GPG form. You can see here the PNG format is here. You can download it and use in your PPTs also. Yes, it's working. Yes. Great, great. So any confusion till yet? कोई question अगर आपका है, if you want anything. One question, my GPT is created only on Plus or Pro versions. I can't see these things in normal chat GPTs. Yes. My GPT, I told you, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी आपको कस्टमाइज जीपीटी क्रिएट करना है, आपको प्रो वर्जन, आपको उसके अंदर पेड वर्जन होना चाहिए. पेड वर्जन में कोई भी चलेगा, तो उनका एंटरप्राइज वर्जन भी चलेगा, प्लस वर्जन भी होना चाहिए. दोनों वर्जन पे वर्क करता है, बट फ्री वर्जन पे ये वर्क नहीं करेगा. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. यस फ्रेंड्स, आई नो जब मैंने ये कहा कि चैट जीपीटी का पेड वर्जन होना चाहिए, तो हम कितने पेड वर्जन ऐसे लें. आई नो मैनी ऑफ यू हैव द लाइव टेंडर्स पेड वर्जन. कईयों ने तो ले ही रखे होंगे. डोंट टेल मी अ लाई कि जहां पे भी लाइव टेंडर्स चल रहे हो, किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो हम उन साइट्स पे जाते हैं, अपना लॉग इन करते हैं और फिर उनकी लाइव टेंडर्स की डिटेल सर्च करते हैं. यू नो फ्रेंड्स, चैट जीपीटी कैन वर्क ऑन द लाइव वर्जन नाउ. Yes, if you want to see the live tenders, it can show you complete details with sites. Wait. Can you show me the live tenders for the chartered accountants? Simple prompting, friends. It is simple conversation. No fancy prompts, no need to learn, and no need to copy paste. You can easily converse with the chat GPT.
See friends, local tender from Jaipur, statewide tenders. I know CA Institute also having a PDC tenders detail also, but सारे tenders उसके अंदर show नहीं होते अगर आपने कभी notice किया हो तो. See the local tender from Jaipur, statewide tenders in Rajasthan, tender monitoring directorate, ICA central region, other national level tenders. Let me know if you would like help locating our FP documents, preparing submissions, or identifying tenders by type or timing. See the sources. You can also see the sources कि कहाँ से इन्होंने tenders निकाले हैं. So the chartered accountant tenders, I told you ना कि chartered accountants के tender details PDICI जो मैं बता रही थी आपको, उसमें opportunities करके सारे tenders दिख जाते हैं. तो see, this is the knowledge base, complete sources. You can see Gujarat tenders. So not only from the ICAI, it is showing all complete details from the other sites also. So मैं ये नहीं कह रही कि अब लाइव टेंडर जो भी आपने डिटेल उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसको ड्रॉप कर दें. यस, बट यू कैन पैरेलली चेक कि हमें दोनों के बेनिफिट्स क्या है. अगर वही चीज हमें चैट जीपीटी में फ्री में मिल रही है तो हम क्यों उसका पे करें, है ना. है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, हमें हमारी कॉस्ट भी तो देखनी है. हम इसको एक प्रॉम्प्ट और दे सकते हैं यहाँ पे कि क्या हमें ये साइट वाइड डिटेल कर सकता है. सो प्लीज कैन यू प्लीज शेयर द लिस्ट ऑफ टेंडर्स with respective site details. Let's check. See the difference searching on web. So it is not in the knowledge base. Yes, knowledge base से कोई data नहीं. It's completely with the search engines. So friends, e-procurement Rajasthan, it is the complete list, and the next step it is showing. If you want कि अपन को एक एक्सेल में बनाकर दे दे कि एक साइड तो हमारे आ जाए कौन कौन से हमारे टेंडर्स लगे हुए हैं, एंड एक साइड में हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन सी साइट पे जाकर हमें अप्लाई करना है इनके लिए. तो यस, यू कैन डू द सेम. यू कैन गिव मोर प्रॉम्प्ट्स टू इट. ओके, सो फॉर custom GPT it is completed. Next, useful tools for AI for chartered accountant practice. Yes, friend, I have too many tools to discuss with you all, but currently in this session we will discuss only 3. First, Notebook LM. So all of you, I'm opening the chat again. Please let me know how many of us are using Notebook LM. So make it interactive so that I can interact with you all. Okay. How many of us are aware about Notebook LM? No. Okay. Friends, let me show you a glitch. As a chartered accountant, when we want to search anything, and when we want to advise our clients, we can't depend on the chat GPT. Let me show you the reason. What are the deductions under 87A of the Income Tax Act? No idea. Okay. So friends, it is showing me the reasons again. Some complete keynote, the rebate is applied after this example illustrations. But friends, it is completely based on web.
I want to show you the sources of these instructions. Wait. When I click on the sources, see the sources: taxbuddy.com, Economic Times, Learn by Quico, Bajaj FinServ, Tax to Win, TaxBuddy, Clear, Policy Bazaar. Friends, we can't depend on the details of the Policy Bazaar. हम पॉलिसी बाजार की चीजों पे तो रिलाय नहीं कर सकते. तो कई साइट्स ऐसी आ रही है जिनका उन्होंने कंसोलिडेट करके हमें डिस्क्रिप्शन दे दिया. तो अब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ मैं ये चाहती हूँ कि ये चैट जीपीटी या ये सारे एलएलएम्स ओनली वही नॉलेज बेस में सर्च करके बताएं जो मैं चाहती हूँ, जो नॉलेज बेस लाइक जो हमारा एक्ट है, जो हमारे रूल्स बने हुए हैं, ये उनके अकॉर्डिंग ही सर्च करें. तो हम क्या कर सकते हैं? यस, फॉर दिस पर्पस वी हैव टू यूज नोटबुक एलएम. ओके, तो स्टार्ट, गो टू योर ब्राउजर एंड राइट नोटबुक एलएम. It's a feature. Yes. So go to Notebook LM. I've already logged in. Please log in with your mail ID. Yes, I'm waiting for you all. Log in with your mail ID so that we can proceed accordingly. और साथ साथ में हम सारी चीज करें, कोई हैसल नहीं हो, हमें समझ में आए कि ये नोटबुक एलएम वर्क कैसे करता है. Okay, everybody is ready. Click on Notebook LM and log in with your Google link. Okay, done? Yes. Okay. So friends, it is a complete dashboard. It's Notebook LM, create new. Here we can create a new notebook for us. We can create 100 notebooks at a time. Friends, 100 notebooks. You will see why I am saying 100 notebook again and again. So it is a knowledge source. Friends, as you can see, you can link your Google Drive, Google Documents, Google Slides. Yes, you can attach your Google Slides too. Link. You can attach your websites. You can attach your YouTubes. You can paste your complete data from the Word itself. You can upload PDF file, text file, markdown audio, anything. So I will start with the PDF. Let's see. I have the Income Tax Act with me. So open. It is uploading. So जब तक ये अपलोड हो रहा है, I can ready to answer your queries. यहाँ पे सबकी सबसे पहली क्वेरी यही आती है, कितने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं मैम? आपने बोल तो दिया कि आप सब अपलोड कर दो. Yes friends, we can upload 50 documents here, and in paid version you can upload 500 documents. Yes, 500. And the size of each document should not be more than 200 MBs. So it is uploading. You can download any PDF from your net. Is it safe? Sir, Mahinder sir is asking, is it safe? So we are not here uploading the private document. We are uploading act, rules, etc. So it's a complete safe chatbot for us. I know you want to use it for your office purpose also. So whether it always saved here, yes, we can create 100 notebooks. That's why I'm emphasizing on yes, 100 notebooks, 100 notebooks. Yes, we can create 100 notebooks here. So friends, it's here, Income Tax Act 1961, the key provisions and amendments. If now I ask, what are the rebates available under section 87A? Let's see ये कैसे आंसर करता है.
Meanwhile, if you can see here, is an audio overview. I'm clicking on the same because it will take time to create mind map and reports. In reports, you can see the briefing of the document. If you want to summarize any kind of document, you can click on briefing documents. It will give you the summarize way of the complete documentation. Study guide, FAQs. Yes, I want to share you a little secret of mine. Actually, I currently passed concurrent audit course. For that purpose, I created a complete notebook for this purpose. Yes, I'll show you later how that worked for me. So friends, here's our answer. Section 87A of Income Tax Act 1961 specify the rebates available to certain individuals from their income tax liability. Here one depicts कि इसने कहाँ से वो चीज bring करी है. Okay, तो rebate of income tax in case of certain individual वो complete यहाँ पे दिया हुआ है. अब सबको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, पीडीएफ तो मैम सभी अपलोड करके दिखा देते हैं, कुछ नया बताओ आप. ये तो हम वैसे भी सर्च कर लेते, हमें करना ही क्या था, कंट्रोल एफ, है ना. ओके, मैं ये चैलेंज लेती हूँ और मैंने इसके लिए एक छोटी सी प्रिपरेशन कर रखी है. आई हैव द यूट्यूब लिंक, यू नो, और ये किसका यूट्यूब लिंक है चला के बताती हूँ. कॉपी, सॉरी फॉर दैट, ये मेरे कारण नहीं चला प्लीज. So, yes. Is this audible? Is this audible, friends? No? Wait. Let me check. My screen is visible or not? Yes, my screen is visible, but audio is not audible, visible. Now it is audible to you all? No. I don't know. Maybe there is a technical glitch from the Zoom side because we are currently working on Notebook Alum 2 now. That's fine. Okay. What if, friends, I upload this link to our created notebook? So, copy. Yes, I know you all are pro in copy paste. And here it is. Add sources, the link of YouTube. Then paste. What I did, I click on add, then YouTube, then paste YouTube URL. So I paste it here. Insert. And it's uploading. It's done. So I'm unticking the same and ask a single question from madam. Yes, you can share in the chat also what kind of question you have to ask from the budget. But yes, we can ask the same question. What are the rebates available as per section 87A and post? Let's see how it reacts.
Friends, here it is the answer. Yes, the answer is ready for us. The rebates available, particularly as updated by the recent budget proposals, significantly impact of income tax liability of individual, while the sources do not explicitly under use section 87A, but जो उन्होंने rebates हैं वो बताएं. And if we click on this, तो वो बता रहे कि YouTube के अंदर कहाँ से उन्होंने ये चीज ली है, सोर्स आईडी के पूरा आ रहा है, और कंप्लीट जहां जहां उन्होंने बोला है उनके सब टाइटल्स में से जो उनकी स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट से इसने कंप्लीट सर्च कर लिया है. So, useful or not? Yes. If you want to brief any document, if you want to learn from any YouTube, you can upload it here. You can brief that YouTube. So, you will get a summary of that video. Yes, it is useful, friend. I know. So, yes, we have our income tax. Wait. It is a briefing document. It's a summary. It's a summary of complete PDF. You can see here, it's a summary. Okay. We can check with this. We can click on, we have the mind. You know how it is work. See, the complete income tax act, the complete sections. If we click on the preliminary, तो preliminary के भी उनमें अंदर sections आ गए हैं complete. Short title, extent, whole of India. If you want to click further, you can click further also, like agriculture income, you can go beyond. See, derived from building owned, occupied, etc., etc. So mind map is the short key. If you want to jump any kind of sections or any kind of chapter, you can jump. So it is a complete mind map for you all. Is this visible? I guess now it is visible for you all. I have one more document for you all. I have already downloaded the current or proposed finance bill. Yes. So we can upload this here also. And we can compare how old scheme will work, how new scheme will work, what are the proposed changes as per the finance bill. If you want to check one, the amendments as amendments for capital gains. So friends, check here. I have selected all sources: finance bill, union budget, and the speech of madam, and income tax act. So let's see the results. It's working. It's taking time because we have uploaded all 3 documents here. Meanwhile, anything is ready. We can click on FAQs as well. FAQs are generating on the base of all resources. You will amazed to see the audio. But it's generating. Wait for a while. It's taking too long. I think it depends on the internet speed also. Today, network speed is not so good. Let me check. So FAQs are ready. What are the recent changes regarding exemption for life insurance policy? How have the provision for the search and seizure assessment been updated? I told you, I prepared my concurrent audit course with this help. Yes, I uploaded all the material provided by the institute and the faculties over there and created FAQs only. And you won't believe I cleared it one go. And
my name was on the serial number 6. I'm not sure it's AI. I'm not sure I scored higher than others, but yes, I cleared in one. So how have the provision for search and seizure assessment have been updated? The complete FAQs you can see here. And what are the amendment of the capital gains? जो हमारा question था उसका आंसर भी देख लेते हैं. कैपिटल गेन्स इसने देखिए जहां जहां भी कोई चीज आ रही है उसने सबका बताया कि उसने सोर्स क्या लिया. जब भी हम चैट जीपीटी पे सर्च कर रहे थे, जब उसने सोर्स दिए थे वो सोर्स रिलायबल नहीं थे. करेक्ट. सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोटबुक एलम नाउ? यस, द करेक्ट बेनिफिट इज ये हमारे जो भी हमने सोर्सेस दिए हैं उसमें से सर्च करता है. करेक्ट. सो जो भी आपको सोर्सेस देने, लाइक आपने कोई पीडीएफ दिया, आप चाहते हो ये उसको ब्रीफ करे, वो उसको ब्रीफ कर देगा. समटाइम्स वी हैव numerous case studies, so you can upload it here and you can see the nutshell of that study also. If you want to accumulate all the case studies, you can go for the same. Yes friends, get ready for this. Is this audible? Please message is this audible or not, so that I can move further. Yes, it is audible. Yes. Okay. So yes friends, we it is like a podcast. If you want to listen the briefing of the document, you can listen, but the magic is here, interactive. What does it mean here? We can interact and we can ask the live questions. So friends, currently there are 2 hosts. One is speaking and I think wait for a while. Hello, can you speak little bit slow because wait. Hello, can you speak slowly because your accent is clearly ununderstandable for me. I'm from India, so please can you speak in Indian accent? Okay, friends, now it is understandable. If you want to ask any question, like the same question, so can you please tell me the changes in under the capital gain? देखो मेरे को मोटिवेट भी वो कर रहा है. Absolutely fantastic question. सीए लोकेश झुंझुनवाला जी का एक क्वेश्चन है. इज दिस sorry these all things in notebook alum? Yes sir, I'm working on notebook alum. My complete screen is shared with you. I'm working on the same only. We can't hear the audio. Wait. Can we restrict the source in the chat GPT only by specifying the prompt? Sir, actually you can restrict the source by giving the prompt, but आप source को कैसे specify करोगे? या तो आपको उसको upload करना पड़ेगा. If you are uploading some kind of sources to your chat GPT and you are asking that please search in this knowledge portal only, तो वो उसी में से आंसर करेगा. But it will not be get limited to your briefing of the document and you have to save that complete chat. It will be not available for any of whenever you need. अगर आप इस chatbot को share भी करना चाहते हैं notebook LM, you can share the chatbot with your clients also. But
चैट जीपीटी का चैट यू कांट शेयर, उसके अंदर से अगर कोई दूसरा उसमें से क्वेश्चन पूछता है वो अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए नोटबुक एलम एज ए चैटबॉट काम करता है, कंप्लीट चैटबॉट, बट वो रिस्ट्रिक्ट है उन सोर्सेज से जिन जो आप उनको अपलोड करेंगे। ओके ओके, थैंक्स फॉर क्लियर। ओके ओके, इट्स ओके सर। So moving ahead, it's completely done. So can we create a chatbot for GST as well? Try करें, चलिए ट्राई करते हैं। मैं अगेन अपने मेन विंडो पे हूँ, देन क्रिएट न्यू, अपलोड सोर्सेस, जीएसटी एक्ट रूल्स। फ्रेंड्स, ये जो जीएसटी का मैं एक्ट रूल्स अपलोड कर रही हूँ, ये इंस्टीट्यूट ने जो प्रोवाइड कराया वो है। लेट मी शो यू द कंप्लीट पीडीएफ, वेट। It's a PDF provided by the institute only. Okay. So I'm uploading the same. It's updated up to the Finance Act 2025. Okay. So let's go. It's uploading right now. So with the same features, no need to explain the audio overview now. Mind map is already clear. Reports are already clear. But how can we use this GST Act and BEAR law with us? अभी तो मैंने जो क्वेरी पूछा था वो रिलेटेड टू सेक्शन पूछा था। अब मैं इसे नॉर्मल क्वेरी, नॉर्मल चैट करो तो भी आंसर करता है या नहीं करता, चेक करें। ओके, लेट्स हैव अ क्वेरी लाइक आई एम अ ट्रेडर of goods, okay, and purchased purchased a commercial vehicle for transportation of the goods. Can you please brief the availability of the input tax credit? Let's check. It will be able to answer our queries or not. So there's a question, madam, how we can take references of GST case laws of Supreme Court and High Court as a reliable source? Yes, we can take the same. In the later version of this webinars, you will get to understand that how can we download all the case laws in one go. Its RPM model is readily available, and if it is on available on the public domain, you can attach the web link from here. Click on add, click on website. So whatever public website you have for all of these, you can attach it here. But please don't try your Taxman subscription because it uses the user ID and password. So it will not give you the reliable answers. Okay. So let's see the answer here. As a trader of goods who purchase a commercial vehicle for their transportation, your eligibility for input tax credit is determined by a specific provision within the goods and service tax laws outlined in the sources. So when we check the eligibility, see, every registered person is entitled to claim the input tax credit on supply of goods services both made to them, provided these are used or intended to be used in the course of furtherance of business.
And when we click on the same, here is the source कि हम person में applicable है क्या, time of supply में हमारा आ रहा है कि section 12 to 15 is here. Then input tax credit refers to the credit of input tax. See, if you can click what is input tax, you can read it here. Input tax includes central tax, state tax, something. Then condition for availing the, actually I want to understand कि 17.5 में block credit है या नहीं है. So restrictions, okay, restrictions. Section 17.5 specifies certain goods and services on which input tax credit is not available, notwithstanding the general eligibility conditions. तो उसने complete conditions भी आ गई है यहाँ पे. Depreciation of input tax credit. It does not explicitly block input tax credit for motor vehicle used for transportation of the goods. So here my answer. If you want to read it, if you want your answer in the size way, you can also prompt the same. Can you summarize the same in 50 words? Wait. Yes. For traders, input tax credit on a commercial vehicle or for good transport is generally available. जो मुझे पढ़ना था वो आंसर तो आ गया. If you want to deep dive, you can deep dive also. Okay. Any other question you can ask with the chat or notebook LM also, but related to the GST only. एक बार हम out of the ambit कोई question करके देखते हैं कि आंसर कर रहा है नहीं कर रहा. पूछे? वही सेम पूछ लेते हैं जो हमने चैट अभी इनकम टैक्स के लिए पूछा था. ओके. व्हाट आर द rebates available under section 87A of income tax act. Oh sorry, act के लिए tax. Okay. Based on the resources, no information available regarding rebates. Okay. तो इसमें तो कुछ है नहीं. The sources mentioned income tax act in the following context कि जहाँ पे income tax है वो ये चीजें रेफर कर रहे हैं. It's a complete politically correct answers, friends. क्योंकि उसके पास नहीं है तो उसने जो भी उस context में उसको मिला उसने वहां पे हमें बताया. उसने defining audits, refer to the permanent account number issued under the Income Tax Act. So wherever it got any reference of the Income Tax Act 1961, it mentioned here, but again, it is not able to answer out of the question. Let's move ahead. So we have discussed how to summarize the document by clicking on the brief document. In report, you have to click brief document. Okay. Then audio and video overview, you can see the chatbot as well. You can see the audio chatbot. If you want to interact in between, you can interact also with these chatbots. Okay. And what about the mind map? Yes, you can see the mind map. It is a whimsical diagram. So wherever you want to click, and you can expand further if it has some complete chapters all over there. If you want to create FAQs, you can create FAQs as well. Okay. So what next? Next is napkin.ai. Okay, again, I have a question for you, friends. What is Napkin AI? How many of us used the napkin.ai? Please message in the chat. No. Okay. For you, it's a great tool. How it used? Let's check. So for the theory purpose, we can see it converts the structured data, structured text into visuals, example diagrams, flowchart, infographics, etc. AI powered and fast generate visuals in seconds.
Friends, it generates visuals. I'm not saying that dashboard as Power BI, but it can create the whimsical diagrams, other charts if you want, it can create it. Support export to PNG, SVG, PDF, PPT formats, integrates with tools like Notion, Google Document, Canva, etc. If you want to create any kind of documentation, creative look, you can create the same. Actually, why napkin.ai is important for me? Actually, earlier I took a webinar with the Khandelwal entrepreneurs. There are too many, like with 100 participants. And पता है उन्होंने मेरे से क्या कहा? मैम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो बहुत बोरिंग होते हैं, जब भी चले जाओ बोरिंग सी बुक्स, बोरिंग सा टेक्स्ट. इवन दो जब हमने एनालाइज किया, जब भी हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं हमारी सारी पीपीटी सब बोरिंग होते हैं. कोई उसके अंदर कोई भी क्लिक ऐसा शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होते, फ्लो चार्ट्स नहीं होते चीजों को प्रेजेंट करने के, एक कंप्लीट लिंगुअल बुक्स होते हैं ये. सो आज चलिए एक इमेज चेंज करते हैं. लेट्स लॉग इन to napkin.ai. Yes, I agree too. Abhishek ji, I am also agree with you. Okay, let's type napkin.ai. Okay, click on get napkin free. Click on new napkin. We have three options: draft with AI, import from file, blank napkin. So start with, for demo, I start with blank napkin. How it works, we will understand, then we will use all three options. Okay. So I have a PDF where again thanks is an income tax act which we uploaded on Notebook Alum, tax on short-term capital gain in certain cases. So copy. It's too lengthy to read right now, no? Okay, just copy. Sorry, you're not audible clearly. Who is there? Okay, and paste it. So it is 111A section on short-term capital gains. Okay, where the total income of the assessee, section A, B, a complete theory part, where the total income of the assessee includes any income chargeable under the head capital gains arising from the transfer of the short-term capital asset being an equity share in company or a unit of an equity oriented fund or a unit of business trust. Complete A, B, C, a very tedious task to read completely. So click on the blue button and see the magic. See friends, the magic is here. It is creating complete visuals. See the 15% tax rate pre-July 23-24 and 20% tax rate post-July 23-24. ओके, ये यहाँ पे अवेलेबल था बट हमने पढ़ा नहीं. सेक्शन ए, at the rate of 15% for any transfer which takes place before 23rd day of July 24. ऐसा नहीं है कि इसने अपनी इच्छा से कुछ क्रिएट किया है. और देखो उसने कितना अच्छा एनालाइज करा है. एंड द see the pictorial way to present. If you want to change the pics, you can change the visual as well. You can click on the change style and see. You can change the style also. Okay. The black and white, the colorful, bold one.
And if you want to change the style, you can click here also. Next option is aspect ratio. As we all are using Instagram, Facebook, so we know these ratios in our presentation: 1:1, 16:9, 4:5. If you want to change the color, you can change the color as it will change the color of background. But I prefer white background because it is easy to paste any of the presentation, and we are using the mails as well. So you can change the background color. Information of this one. If you are not satisfied, so you can change this visual also. If you want to change it here, if we change something like 23rd, if I type 26, see, updating the visuals. So friends, it is 26 July. You can also update your text and it will be automatically updated in your pictorial also. Okay, that's great now. Now we all chartered accountants, now not so more boring. अगर हमें कोई email भी लिखना है, we can use the same. Okay, click on UNapkin again. If you want to import from a file, you can import like I earlier did from PDF, PPTs, etc. We can click here on the browse files and we can click any of the act, say GST Act. It will take time because it's a huge file, but you can upload the same here and it will create. But the magic is draft with AI. Friends, napkin.ai is not just a pictorial conversion of your text. It can write with the helping of artificial intelligence. How? We can write a prompt here like, please generate an email for proposal of chartered accountancy services in respect of the concern having had office in Australia. Okay, let's see. I don't know what happened. Wait. Please generate an email for the proposal of chartered accountants services for a concern having had office in Australia. Copy कर लेते हैं इस बार. Then continue. AI is writing. Proposal for chartered accountancy services for Australian headquarter concern. Understanding your need. Complete fee structure, benefits. Our approach is drafting complete profile
fee structure, benefit, why choosing us, next steps, contact information. So can we convert the benefit of choosing us? If you want to convert this section only, you have to click this blue button appearing on the left side. Person, actually, when we mail such kind of lengthy documents, nobody will understand the complete, or nobody will give the complete time to read the complete things. But if you post such kind of images over there, it will enhance your writing. See benefits of the chartered accountants. You can change the text as well. If you don't write the benefits of chartered accountant, you can change benefits to higher or home. You can change. Why? First, expertise, efficiency, compliances, cost saving, peace of mind. If you want to change our approach, simply you have to click here, click on the energy button. And yes, have a sip of tea. Because our intelligent article is working. Yes. So we can choose any of them. See, if you want to change, black and white, less colored. This one, if you want to change the background, you can change that as well. But I always suggest you have to take only white background. So it will be easy to paste in your any kind of document, PDF, etc., etc. From here, you can download or export this image, PNG, SVG, PDF, PPT, any format. Again, I will suggest PNG format because it is easy to apply PNG format to any other document like PDF, PPT, any other document as well. Okay. So it's here napkin.ai. To enhance the visualization, we already seen. What is Napkin AI? We have discussed. Visual creation, we did. Benefits of Napkin AI, already discussed. Drafting with AI and demonstration completed. Then the next one, the CA-GPT. Okay, again, my question to you all. Abhinav Chaudhary ji ka question hai, how we can save these as images or otherwise? Yes, as shown in the pictorial or demonstration, if you have checked. Okay. You can click on the download button to export the image, and I suggest please download it in PNG format only. Okay. So my question to all is this: why CA-GPT? And how many of us are using CA-GPT? Please raise your hand or type yes. How many of us are using? Only two raised. Okay, yes. Anjali Kumar Singh ji, yes. और कोई नहीं CA-GPT यूज कर रहा है. Okay, how many of us are not aware about CA-GPT? Kuldeep, yes, heard about it but not use. Abhishek Sharma ji. Okay. So friends, CA-GPT is a customized GPT. From today onwards, we may use CA Lokesh ji. Yes, you should use. Actually, friends, CA-GPT is a customized GPT only for the CA students and members. So we should use.
How it works? Actually, it consolidates all the complete publication and data at the single window. Okay, start with the demonstration. अगर आपने ChatGPT अभी यूज नहीं किया है तो let's get ready for the wonderful GPT prepared by the members, the visionary leaders of ours, ChatGPT. So you can access from ai.ici.arg as well, or you can write ChatGPT on Google. Here, there is a login. You have to write your membership number. For my login, I have to write of my send OTP. And OTP is verify and proceed. So friends, we are on the dashboard. This is CAGPT list. Accounting Standard Boards, Act and Regulation, Official ICI Act and Regulations GPT, Audit and Assurance Standard Board, Board of Internal Audit and Management Accounting, Corporate Laws and Corporate Governance, Digital Accounting and Assurance Board, Direct Tax Committee, Ethical Standard Board, Export Advisory Committee, Financial Reporting and Review Board, GST and Indirect Taxes Committee, Insolvency, Members and Student Peer Review Board, all of them. And we have other GPTs as well, friends. Constitution Guide of India, DPDP Act, Digital Personal Data Protection Act, New Income Tax Bill, and Bank Audit 25, ICI GPT. So how we can use these GPTs? Start with a simple demonstration. Like earlier, we asked different questions from the chat GPT. So we should ask the knowledge-based questions with these GPTs only. Like, अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट का कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क हेयर ओनली बिकॉज इट्स द जीपीटी फॉर अस. तो अगर हम यहाँ पर अगेन हमारे वही पुराने क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक बार, then we will move ahead. What are the rebates available under section 87A? Searching my knowledge, it means जो knowledge base में है उसमें search कर रहे हैं, not searching on the web. Okay. Yes, I know you. Some of you are questioning कि ये तो मुझे वापस चैट जीपीटी पर लेकर आ गया. So again मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी का ही एक कस्टमाइज वर्जन है CAGPT, बट ओनली फॉर मेंबर्स स्टूडेंट्स यूज. वो यहाँ पर है. ओके. Then again move to other GPTs as well. Nowadays मेरे को एक ही क्वेश्चन बार बार आता है कि कंप्लीट जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो एप्लीकेबल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. हमने नोट्स एंड अकाउंट्स में उनको लिखा है नहीं लिखा है, तो उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है. I have a small Word file of financial statements for demonstration purpose. Click on Accounting Standard Boards. Okay. Click on Add button. You can add any file you want to add. I'm adding demo sales. Whenever you upload any kind of these files, first you have to ask, can you read this file, or are you able to read this file or not?
Right, sir. Again, searching my knowledge. Yes, I've read the file title, demo sales, and it contains the statement of complete the financial statement, balance sheet, bundle of this. Can you analyze the statements? So अब हम इससे पूछ सकते हैं कि भाई क्या इंडियस और टैक्स इम्प्लीकेशंस कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और वी कैन आस्क कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो लगने चाहिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, गिव मी the insights related to the accounting standards applicability Okay, would you like a checklist for the AI compliances or help with AI based note preparation to this financial statement? Yes. Please share the draft. So friends, it's a complete disclosure. So would you like this in a Word format or integrated into your financial statement as a draft notes? Yes. Please go ahead. So you can add the complete summary of the applicability of accounting standards in your notes. See the basis of preparation. So that actually, friends, these all GPTs are prepared as per the instruction and as per the guidance notes, as per the publication of the ICAI. So there is a little bit chance of lacunas. Okay. And you can please go through all these documents before uploading on the public portal. So you can check like cash flow statement. Cash flow statement have not been presented as the enterprise qualifier as a level 3 enterprise and it is exempt from this requirement. So कंप्लीट अगर जो भी हमारी छोटी कंसर्न्स होते हैं उनके नोट्स ऑन अकाउंट्स हम इसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं एंड वो भी कस्टमाइज वे में. ओके, फर्स्ट पर्पस तो ये सॉल्व हो गया हमारा. एंड द सेकंड पर्पस, फ्रेंड्स, अब मुझे आप ये बताइए कि हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, are preparing project report for the finance purpose? I'm not able to see your chats, friends. Sharing data here is safe, that is confidentiality. Okay, one more thing you can do.
एक्चुअली होता क्या है कि जितनी पब्लिक कंपनीज है वो तो एमसी के पोर्टल पे अपना डेटा सारा अपलोड करती ही है। हम तो बैलेंस शीट वगैरह यही दे रहे हैं, वो तो सारे के सारे हमें प्रेजेंट करना ही है एनी हाउ इन फ्रंट ऑफ बैंक्स और एटसेट्रा। तो ये वैसे तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अदरवाइज अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट जो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियल है, तो यूज द मास्क डॉक्यूमेंट्स। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करें, if there is a sensitive document or privacy concern, then you have to upload a mask document. For mask documentation, you can create a offline tool for yourself, और जिसका डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट वेबिनार में मिलेगा। अभी हम केवल CAGPT सीखते हैं। Then we will definitely give you the tools, yeah, how you can prepare your own tools. I know you all are financial persons, but for friends, after this AI revolution, you can create your own offline tools. You can create your own apps. You can create your own dashboards. You can create your own websites as well. Okay. So project report, एक अगेन एक टीडीएस टास्क है। अगर मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के लिए आती है तो क्या करते हैं हम, पहले पूरा रिसर्च करना रहता है उस इंडस्ट्रीज का, है ना, और उसके बाद हमें क्या करना होता है, फिर हम उसके प्रोजेक्शंस करते हैं। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, CAGPT has analyzed over 75 industries, enabling us to create comprehensive project report with its assistance. More than 75 industries, friends. Let me show you where you can access these. Again, you have to click on CAGPT. Scroll down, other GPTs, again scroll down, industry forum. You can see the industry forum here. Click on the industry forum. So friends, these are the complete list of the industries: AI, aerospace, defense industry, agrochemicals, alcoholic beverages, bank industry, cement product industry, computer education industry, crude oil, electronic industries, diversify industries in AI, credit rating industries, ferroalloys, gas distribution industries, and see, more than 75 industries are in a list. अगर हमें अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है तो हमें इधर उधर कहीं रिसर्च करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी ये प्लेटर सर्व्ड है ऑफ द इंडस्ट्रीज, कंप्लीट डिस्कशन विद लाइक। चलिए अपन एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। आई नो अगर अपन कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक क्या दिक्कत आती है कि मैम इसका प्रॉम्प्ट क्या दें, कैसे हम प्रॉम्प्ट लिखें कि वो हमें कंप्लीट एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ड्राफ्ट करके दे दे। यही प्रॉब्लम आ रही है अभी। और अगर मैं कहूं कि प्रॉम्प्ट लिखवाने का काम भी हम हमारे इंटेलिजेंट आर्टिकल से करवा लें तो क्या होगा, चेक करें। चलिए वेट, प्रॉम्प्ट राइटिंग फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिंपल है। प्रॉम्प्ट लिखने का काम भी हम किस पे छोड़ दें, चैट जीपीटी पे छोड़ देते हैं। कैसे, हमें इसको सैंडविच करना होगा, दो लाइंस के बीच में सैंडविच। सबसे पहले हमें अप्रिशिएट करना होगा हमारे चैट जीपीटी को। कैसे, उसको टास्क देना है, यू आर अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक्सपर्ट, या आप ऐसे लिख सकते हैं एक्ट एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक्सपर्ट। ओके, रोल क्या है आपका, एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद ओवर 10 years एक्सपीरियंस। टास्क क्या दे रहे हैं अपन उसको, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल्स क्या है, हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी नो कि हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए। मैंने कुछ यहाँ मेंशन करी है। फर्स्ट, 5-year प्रोजेक्शन, कैश क्रेडिट अमाउंट ऑफ 2 crore, टर्म लोन, कैश क्रेडिट इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रिक्वायर्ड। हमें क्या चाहिए उससे, बैलेंस शीट चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, P&L अकाउंट चाहिए। द बिजनेस इज न्यू एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टफन ग्लास, प्लीज डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर दिस रिक्वेस्ट एक्सटेंडिंग टू 500 words। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिमिट करना ही पड़ेगा,
कि आप जो भी प्रॉम्प्ट उसको दे रहे हैं वो एक्सटेंड टू कुछ वर्ड से लिमिटेड हो, क्योंकि गार्ड रेल्स अगर नहीं, अगर आपने उसको लिमिटेशन नहीं दी, यू नो ना, सब बहानों में बह जाएंगे, फिर बहुत लंबा प्रॉम्प्ट आ जाएगा और चैट जीपीटी या हमारा सी जीपीटी उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे 500 वर्ड्स एंड यू कैन ऑल्सो लिमिटेड टू 300 वर्ड्स। ओके, सो अगेन द सिंपल टास्क, control copy and paste it. Type. Your typing speed is very slow, friends. Chat GPT. I'm on the window of Chat GPT and I'm pasting here. So here's the complete prompt. You are an experienced chartered accountant and financial analyst with over 10 years expertise in preparing detailed project report and financial models for manufacturing ventures. Your task is to prepare comprehensive 5-year financial projections and project report for newly established business involved in the manufacturing of toughened glass in India. The business is at the inception stage and is seeking funding support from banks and financial institutions. Your deliverable must be structured, professional, and bank compliant to facilitate loan processing. See the project details, business, location, funding requirement, the term loan, the CC, interest rate, required deliverables. Prepare the following for a 5-year period. First, projected balance sheet, projected P&L, projected cash flow, loan repayment schedule, assumption and notes to financials. Assumptions to include setup and go live timeline for the plant, production capacity utilization for each year, costing for land, building, plant and machinery. Friends, you know, it will take a complete 1 day to research about the plant and machinery and their capacity of utilization, etc. Plant and machinery, manpower, and raw material revenue estimation based on expected demands and industry pricing, depreciation as per income tax and Companies Act norms, interest calculation and EMI schedules, working capital margin requirement, and inventory cycle. Ensure all financials are consistent and interlinked. The report should be professionally formatted and easy to understand, suitable for the submission to a bank or NBFC for funding purpose. Include brief commentary and key financials ratios as required for lender analysis. Okay. Sorry. So it's a complete prompt and nicely written. So what we have to do, we have to click copy and paste. Where? In the glass industry. So I clicked on the glass industry analysis and I pasted the prompt. And again, please sit back and wait for our article to submit the complete project report. So friends, in a sip of water, it's ready. Project report, business name, industry, location, prepared by, report date, executive summary. This project involves setting up a state-of-art manufacturing facility for toughened or tempered glass in India. And see the project highlights, total project cost, debt requirement, interest rate, implementation timelines, plant capacity up to ramp up 60, 80, 90, and 100. Okay, friends, it will start with 60%, then next year 80, next year 90, then 100 over 5 years. Projected revenue in first year, अपने हिसाब से इसने अपना रेवेन्यू भी सिलेक्ट कर लिया, भी 6.30 करोड़ रहेगा. Project PAT in the year 5, 2.29 CRs. C, the project cost and means of finance. इसने अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट इसको ड्राफ्ट किया है. लैंड एंड साइट डेवलपमेंट, बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स, प्लांट एंड मशीनरी,
हाउ वुड यू रेट दिस जीपीटी सो फार? अरे भाई पहले काम तो होने दे, फिर रेट करेंगे. ओके, वी विल रेट द furniture, computers, vehicles, pre-operative expenses, contingency and margin money, and total project cost is 700 lakhs, 7 CR. Means of finance, promoter equity and term loan. क्योंकि हमने उसको कहा है ना कि हम इतना टर्म लोन लेंगे, तो प्रमोटर इक्विटी उन्होंने एज पर नॉर्म्स ले लिया. Assumption and basis, implementation timelines 0 to 12 month, land acquisition, building construction and installation. Month 13 trial production, month 14 commercial. सो डीसीसीओ क्या हो जाएगा इसका? डीसीसीओ मंथ 14 में हो जाएगा, जब भी अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1 लाख स्क्वायर मीटर पर ईयर. एक्चुअल यूटिलाइजेशन जो हमने ऊपर देखा था 60, 80, 90, 100, 100. सेल प्राइस एंड रेवेन्यू. सेल प्राइस क्या रहेगी? एवरेज सेलिंग प्राइस इज 1050. एंड फ्रेंड्स, यू वोंट बिलीव मी दैट इट इज करेक्ट. अभी करंटली यही रेट चल रहा है मार्केट के अंदर. Revenue grows with the volume, no price escalation assumed. Raw material cost 35% of the sale value. Utilities, power and fuel. Manpower cost, other expenses, depreciation. Income tax act, income tax flat 25%. Working capital. Projected financial statement. See the P&L, friends. जिसके लिए हमें कई शीट्स अटैच करने पड़ते हैं, कई जगह लिंकेज करने पड़ते हैं. इट्स रेडी टू ईट. यस, आप कहीं पे भी इसको यहाँ से कॉपी करें. कभी भी जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आते हैं या कोड आते हैं, डोंट कॉपी देम लाइक दिस कि यहाँ पे हमने क्या और कॉपी किया. नो, कॉपी फ्रॉम हियर. It will simply copy your complete data, and if you want to paste in Excel, you can paste there as well. So revenue, raw materials, power and fuel, employee costs, other expenses. EBITDA तो ये यहाँ पे आ ही रहा है. Depreciation, interest, PBT and tax and PAT. Balance sheet, share capital will remain same with the 200 lakhs. Reserve and surpluses, term loan, cash credit, fixed assets, current assets, cash flow statement, loan repayment schedule, ये ratios and conclusion. Friends, ये complete project report will take at least 3 to 4 days for us अगर हम विदाउट AI इसको बनाते हैं. अब हम बनाएंगे तो सही, बट विद द हेल्प ऑफ CAGPT. क्यों? फर्स्ट द रीजन इज कि वहां पे कंप्लीट इंडस्ट्रीज का एक एनालिसिस दिया हुआ है. सेकेंड, जैसे बोला जाता है ना कि जब हनुमान जी सीता मैया के पास गए तो उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई मेरे पास अष्ट सिद्धि है, नव निधियां है, वो नहीं बताया. उन्होंने सिंपली कहा कि मैं रामदूत हनुमान. तो सेम वैसे ही हम हैं कि हमें अगर इंस्टीट्यूट ने CAGPT प्रोवाइड किया है, rather relying from others, आप इस जीपीटी पे रिलाय कर सकते हैं. आपको अगर कोई डेटाबेस सर्च करना है, कोई डेटाबेस एनालिसिस करना है, तो आप इस पे सर्च कर सकते हैं. आपको अगर अपनी बैलेंस शीट ड्राफ्ट आपने बनाया है, उसका जो भी आपको लगता है कि नेम हार्डर है, उसको रिमूव कर दीजिए वहां पे और अपलोड ऑन CAGPT. CAGPT पे अपलोड करें. आप रिस्क इस पे सर्च कर सकते हो. आपने जो प्रिपरेशन करी नोट्स ऑन अकाउंट किया, वो एनालिसिस कर सकते हो. अगर कोई न्यू स्टार्टअप है, आप उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो. इवन फ्रेंड्स, द बेसिक जनरल एंट्रीज, अगर आपको कोई जनरल एंट्रीज भी पूछनी है, यू कैन क्लिक ऑन द CAGPT एंड आस्क. कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन रिलेटेड टू द अकाउंट्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड रिलेटेड टू द एक्ट, यू कैन आस्क. ओके, so with this, I want to thank you all, the CCMs and RCMs available here, Ankur Gupta ji, for giving me the opportunity. And friends, I am using that code which I generated through the help of ChatGPT. You can scan this and save my number as well. And if you have any question, you may ask. Thank you so much, Mega Ma'am, for the session which you have taken on AI. Actually, this session is
basically very enlightening. And I think all the viewers who have joined this session must have gained a lot of knowledge from these sessions, as I was also learning a lot, because there are various tools which daily come to our notice, but until and unless we take sessions, we just get the details about that particular tool, then only we are able to use that tool. So I think the tools which you have told us today, particularly one of the tool was new for me also, and thank you so much for teaching us this session. Now I would like to request any of the members, if they have any query, they can ask in the chat box. Okay, I think there is no query which is there in the chat box. So for any kind of help, if anyone needs any kind of help in this particular session or this course or anything related to AI, they can directly contact ma'am, as she has already shared her number, her details. Otherwise, you can contact me as well. I'll try to solve it myself, or if I'm not well versed, then I'll take help of seniors and better learned person to solve your queries. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, Ankur sir. I think he's not there. Okay, no problem. Chalo. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir.